Hi everyone. So today let's talk about something that has been a part of us since childhood actually. It's an emotion जिसको हम बुरा समझते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो natural है. That emotion is anger. Anger जो है वो गलत emotion नहीं है क्योंकि हम सबको गुस्सा तो ज़रूर आता है, चाहे हम काम पे हों, चाहे फैमिली की फ्रस्ट्रेशंस हों, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो. गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो शो अप करेगा और करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि क्यों आता है और इसको हम हैंडल कैसे करते हैं. गुस्सा आना बुरी चीज़ नहीं है, उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से शो करते हैं लोगों को, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ पे जो हेल्प कर सकता है आपके गुस्से को सही तरीके से एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, and we will also learn as to why anger shows up and what exactly is anger. Anger जो है वो एक secondary emotion है. इसका मतलब ये है कि उसके पीछे और बहुत सारे emotions होते हैं. तो कभी कभी जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या इरिटेटेड फील करते हैं या कभी कभी हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, हम हर्ट होते हैं, तब हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, तो वो चीज़ एंगर की शक्ल में निकल के आती है. एट टाइम्स कभी कभी ये स्ट्रेस की वजह से, कभी कभी पावरलेस फील करने की वजह से, क्योंकि एज ह्यूमंस हमारे अंदर एक इनेट चीज़ होती है कि वी नीड टू कंट्रोल थिंग्स अराउंड अस, और वो जब हमसे नहीं हो रहा होता है तब हमें गुस्सा आता है. एट टाइम्स गुस्सा जो है स्पेशली मर्दों में डिप्रेशन की शक्ल में भी शो अप हो रहा होता है. यू नो व्हेन यू हैव डिप्रेशन और आप अपने सिम्टम्स को या आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, तो वो गुस्से की शक्ल में निकल के आता है. अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों को भी गुस्सा आ रहा होता है तो हम उनको कहते हैं कि ये चीज़ मत करो, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, या चुप हो जाओ, गुस्सा मत करो. गुस्से को हम जो है वो शट डाउन कर देते हैं कम्प्लीटली उनके सिस्टम से, लेकिन गुस्सा तो जाता नहीं है बिकॉज़ वो एक नेचुरल इमोशन है. हम ये उनको नहीं बताते कि अच्छा गुस्से को एक्सप्रेस कंस्ट्रक्टिवली किस तरह से किया जाता है. जब गुस्सा आ रहा होता है तब हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिसकी वजह से गुस्सा जो है वो आपका सही और हेल्दी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकें. अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते किसी दूसरे के सामने. हम डिसअपॉइंटेड होते हैं या हर्ट फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो बात गुस्से से कह देते हैं. नाउ इस चीज़ में किसी का भी फ़ायदा नहीं होता बिकॉज सामने वाले शख्स को आपकी बात भी नहीं समझ में आती और आप भी जो है जो एक्चुअल इमोशन फील कर रहे हैं, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो लेट्स लर्न 3 वेज जिसमें जो है वो आप गुस्से को पॉज कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें उसके ऊपर और फिर उस गुस्से को रीडायरेक्ट कर सकें ताकि हम एक्चुअल में अपने इमोशंस को बता सकें और लोगों से कम्युनिकेट करना, लोग हमें फिर अंडरस्टैंड भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे. तो सबसे पहले की स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं कि गुस्से के पीछे जो अंडरलाइंग थॉट है या जो अंडरलाइंग इमोशन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, if somebody is not listening to you, be it your colleague, your subordinates or your partner even, और अगर आप उनको जाके गुस्से से आउटबर्स्ट में एक्सप्रेस करेंगे कि you never listen to me, आप कभी मेरी बात नहीं समझते, आपको तो काम आता ही नहीं है, आपको तो ये नहीं करना आता, तो उससे क्या होगा, सामने वाले इंसान को आपका सिर्फ गुस्सा दिखेगा, वो आपकी बात को समझ नहीं सकेगा इवन दो आपकी बात ठीक है, गलत नहीं है. नाउ जब आप इस थॉट को रीडायरेक्ट करेंगे कि अच्छा इस बात को ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है, बिकॉज आपको गुस्सा डिसरिस्पेक्ट की वजह से या डिसअप्रूवल की वजह से या डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आ रहा है, तो आप उसको उस तरीके से एक्सप्रेस करें क्योंकि आइडेंटिफाई तो हो गया. फिर उसके बाद उसको आपने रीडायरेक्ट करना है कि अच्छा इस बात को मैं दोबारा से सही से कैसे बोल सकता हूँ, ये बोल सकती हूँ, एक्सप्रेस कैसे कर सकती हूँ अपना गुस्से को. एंड देन जब आप वो बात थोड़ा सा गुस्सा ज़रूरी नहीं है कि आप आउटबर्स्ट होके जो है वो उसकी एक्सप्रेशन हो, आप बहुत काम तरीके से भी गुस्से को एक्सप्रेस कर सकते हैं.
اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس غصے کو ری ڈائریکٹ کریں کہ میں اس غصے کو کسی اور طریقے سے کیسے ایکسپریس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تاکہ سامنے والے انسان کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور میری بھی جو ایک نیڈ ہے ٹو بیسکلی ایکسپریس مائی ایموشنز وہ بھی فلفل ہو جائے. سیکنڈ ٹیکنیک یہ ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو 2 منٹ کے لیے آپ تھوڑی سی بریدنگ کر لیں. Now یہ ٹیکنیک ہے, it's called 4-7-8. So you inhale for 4 seconds, you hold for 7 seconds and then you exhale for 8 seconds. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ آپ کی باڈی کو بتا رہا ہوتا ہے not to get so worked up, آپ کے نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کرتا ہے تاکہ آپ اس پہلی ٹیکنیک کو ایزیلی کر سکیں کہ آپ اپنے تھاٹس کو ری ڈائریکٹ کر سکیں کہ میں اس چیز کو کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہوں. بیکاز وین یو آل ورکڈ اپ اور جب آپ ایموشنلی اوورویلمڈ ہوتے ہیں تب آپ اسٹریٹ نہیں سوچ پاتے اور آپ کے ایموشنز آپ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. بٹ بائی ڈوئنگ this technique, the 4-7-8 technique, you are basically taking over the emotion and you are not allowing the emotion to control you anymore. And then you have a choice as to how to express that emotion to other people and how to communicate it. تیسری ٹیکنیک یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہو so you leave the space. چاہے وہ آپ کے آفس میں ہو, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو, آپ اس کمرے کو, اس ایریا کو 2-3 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. Go out for a light walk یا پھر کسی دوست کو کال کر لیں, کوئی کانورسیشن کر لیں, یا تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے نوٹ بک میں جرنل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو. لیکن اس غصے کو پروسیس ضرور کریں, اس غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو اوور ویل نہ ہونے دیں. سو آل ان آل ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں دیٹ اینگر از اے ویری نیچرل ایموشن. اٹس ویری نارمل ٹو فیل اینگری ایٹ ٹائمز, بٹ اینگر کو کس طریقے سے ایکسپریس کرنا ہے, کس طریقے سے بتانا ہے, کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, یہ ہماری چوائس ہوتی ہے. اور اس چوائس کو ہمیں ڈیفینیٹلی چوز کرنا چاہیے, بیکاز ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اینگر ہمیں چوز کر لیتا ہے. اینگر ہماری پرسنالٹی کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو کہ ہمیں کانشیس ایفرٹ سے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیو دا اسپیس, بریتھ, ری ڈائریکٹ یور تھاٹس, اس سے اس سب چیزوں کو چینج کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی سو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل.